Assalamu alaikum class. Today it's our lecture number 6 of chapter number 2 computer components. Today our objectives are control unit. We will discuss its definition and functions. Next is motherboard, and then we will discuss about the input devices, and in the last output devices. Control unit. It actually controls the time and sequence of operations of a computer. It works like a traffic policeman. जैसे बेटा आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो रोड पे कंट्रोल कर रहे होते हैं ट्रैफिक को. इन द सेम सिनेरियो इन अ कंप्यूटर वी हैव अ कंट्रोल यूनिट इन अ कंप्यूटर, और इसकी ड्यूटी भी यही होती है कि वो क्या परफॉर्म करेगा. वो तमाम सिग्नल्स जो कंप्यूटर के इन और आउट हो रहे होते हैं, इट has a duty to control these all the signals. So it works like a traffic policeman, directing the flow of data between the computer and its component. तो जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं इनके दरमियान में चूंकि सिग्नल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, so it is a duty of control unit to transmit that all the signals. The control unit directs and coordinates all the activities of a computer. कंप्यूटर में बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं. इफ़ यू जस्ट असाइन अ सिंगल टास्क टू द कंप्यूटर, so in the backend there is a lot of different activities which will also be involved to complete that task. So all that activities will be handled by this control unit. Okay, if we discuss its function, then the control unit includes the following functions. अब उसके कौन कौन से functions होते हैं वो हम देख लेते हैं. Control input and output devices. This means that कि जो control unit है वो basically क्या करता है, वो हमारी तमाम input and output devices को control करता है. For example, our keyboard, mouse, monitor, printer, all these devices will be controlled by the control unit. How? When you press any key from the keyboard, then what happens? The keyboard will generate a signal, and that signal will actually transmit to the CPU. Then this CPU will actually do some process which is required. After that process, the data will transmit towards the monitor. तो अब ये सारा काम जो है ये परफॉर्म कौन करेगा? ये परफॉर्म करता है कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट इज it stores and retrieves data from memory. In your computer there is a memory also available in the form of like RAM and ROM. So control unit actually store the information to that memory and retrieve that data or information when it's required. So this is also the duty of control unit. Next is it retrieves the data from storage devices. In your computer, there are many different storage devices also available, just like a hard disk, USB, CD-ROM. So it is also the duty of control unit that whenever
you require the data, then that control unit will actually retrieve that data from the storage devices and do work accordingly. आप अगर अपने कंप्यूटर के साथ USB को अटैच करते हैं to store some files into the USB from your computer, तो आप अपनी USB को जब कंप्यूटर के साथ बेटा अटैच कर देते हैं, and after that when you copy some files from your hard drive and paste it into the USB drive, then now it is a duty of control unit to transmit all these information, all these files to the USB from the hard drive. So this is actually the point, that it retrieves data from storage devices. It routes information of arithmetic and logical operation. Now this is a two different word, arithmetic and logic. First of all, we will discuss about it. Arithmetic means beta arithmetic operations. We have many arithmetic operations. For example, plus, minus, multiplication, division. These all are the arithmetic operations. इन्हें बाइनरी ऑपरेशंस भी कहा जाता है. बाइनरी ऑपरेशंस वर्ड एक्चुअली बाइनरी टू डिफरेंट वर्ड का कॉम्बिनेशन है, बाई एंड नरी. बाई मीन्स टू एंड नरी मीन्स सिस्टम. सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं उसमें हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं मोस्टली. बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऐसे ऑपरेशंस जिनको मिनिमम 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं. Binary operation must require a minimum 2 values. For example, 2 plus 3. Now here we have two different value, 2 and 3. ठीक है, minimum 2 required है plus करने के लिए. We cannot write 2 plus and then blank. जाहिर है 2 में कुछ ऐड करना है ना, कोई वैल्यू होगी लाजमी. So here we must require minimum 2 values, right? So arithmetic operations are like plus, minus, multiplication and division. And logical operation means कि ऐसे ऑपरेशन जिनमें कंपैरिजन हो, ठीक है, जिसमें कंडीशंस हो. कंपैरिजन मींस जहां पर डेटा की कंपैरिजन हो सके, दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस और दिस वैल्यू इज लेस देन दिस और these two values are equal. So these are the logical operations. So again I read it. It routes information of arithmetic and logical operations. जितनी भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन को यही जो है वो रूट करता है. नेक्स्ट पॉइंट, it controls the direction of arithmetic and logical operations. हमारे जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनकी डायरेक्शन भी यही तय करता है. इट मीन्स दैट जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म हो रहे होते हैं, दैट which part of the processor should have to do the arithmetic operations and which part of the processor to perform the logical operations. These all things will be decided from the control unit. So that control unit basically directs these all things, that कि प्रोसेसर के कौन से पार्ट ने जो है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना और कौन से पार्ट ने लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना. प्रोसेसर हैव मैनी पार्ट्स. आजकल जो हमारे पास प्रोसेसर है, these are actually these have multiple cores and multiple threads. पहले के दौर में सिंगल प्रोसेसर आता था, आज भी फिजिकल वो सिंगल होता है बट लॉजिकली वो एक से ज्यादा होते हैं. इफ यू आर यूजिंग अ क्वाड कोर, right? So quad means 4 cores, as it is octa core. Octa means 8 cores. Dual core means 2 cores. तो फिजिकली वो एक प्रोसेसर होता है बट इट्स लॉजिकली
more than one processor. तो इन प्रोसेसर के ये जो अलग-अलग कोर्स हैं, these different cores have to be assigned the different task on a same time. ठीक है. Next is it controls the execution of program. देखिए हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं. So it is a duty of control unit to execute these programs. When we write any program in a computer, then we just run that program at once. And after that, what happens? That program will execute and work automatically according to its code. तो अब जो उसकी एग्जीक्यूशन है, हमने तो उसे रन कर दिया, उसके बाद वो जो रन हो रहा है, ठीक है, वो लाइन बाय लाइन जो हमने स्टेप्स उसमें लिखे हुए जो कोडिंग, उन पे जो टास्क परफॉर्म होगा, हाउ दैट टास्क विल बी परफॉर्म, that task will also be performed with the help of control unit. That control unit basically gave instruction to that program that which line should be operated first, and when the first task will be complete according to first line, then the next line will be executed. So these all things will also be controlled by this control unit. Next we have motherboard. Motherboard is also a very important part. It is a rectangular card containing the circuitry that connects the processor to the other hardware. देखिए मदरबोर्ड बेटा बहुत अहम हिस्सा है. जस्ट लाइक अ मदर, जैसे माँ अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के रखती है, सेम motherboard also attach all the components of a computer with itself. कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, these all will actually be connected with the motherboard. चाहे वो हमारा प्रोसेसर हो, चाहे वो हमारा ग्राफिक्स कार्ड हो, whether it's our sound card, hard drive, CD-ROM, USB, monitor, keyboard, mouse, speakers, everything will be connected with the motherboard. And this is the duty of motherboard, to connect these all things with each other. ठीक है, इन सबको जोड़ेगा आपस में मदरबोर्ड, और उनके दरमियान के सिग्नल्स को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट, राइट. इन मोस्ट personal computer, many internal devices such as video cards, sound cards, and other devices are housed on this board. अच्छा, इनमें से बहुत सी डिवाइसेस जो हैं, ये आपके मदरबोर्ड के ऊपर ही अटैच होती हैं, बिल्ट इन. For example, you can see here in this picture, हमारे पास यहाँ साउंड कार्ड अटैच है. This one is our sound card. हमारे पास यहाँ LAN कार्ड अवेलेबल है. We have a USB port. We have a VGA cable, VGA port, sorry. We have processor. We have different many ports also available. So these all things actually housed on this board. Next we have input and output devices. Now this is also very important. If we talk about first input device, बहुत गौर से समझिएगा इसको. देखिए बेटा सिनेरियो है क्या इनपुट डिवाइसेस का. When I press capital A from the keyboard, that keyboard will generate a signal, and that signal will actually transmit to the CPU. Do you know
विच लैंग्वेज कंप्यूटर कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, कौन सी ज़बान है जो कंप्यूटर समझता है? मुझे चैट बॉक्स में लिखकर फ़ौरन इसका आंसर सेंड करें, और इफ़ यू नो इट्स आंसर देन यू कैन आल्सो रेज योर हैंड, देन आई विल स्विच ऑन योर माइक. Okay beta, computer can only understand one language, that is binary language, and this is also known as a machine language, right? अब ये ए जब मैं प्रेस करता हूँ तो आगे क्या सारा सिनेरियो है, इसे हम अभी आगे डिस्कस करते हैं. बट बिफोर दैट मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको डेफिनेशन वगैरह इसके पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ. Input devices are physical equipments that are used to enter data into the computer. तो इनपुट डिवाइसेस बेटा वो फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनके जरिए आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, like microphone, camera. So these all are the input devices. Through these, you actually enter your data, different type of data into the computer. Next, its purpose. The purpose of input device is to pass information into the memory unit of a CPU and convert that characters or letters, numbers, and other symbols into binary pattern, which can be held inside the computer memory. अब यहाँ से मैं दोबारा आपको वो बाइनरी वाली जो सिचुएशन थी वो क्लियर कर देता हूँ. देखिए होता क्या है, when I press capital A from the keyboard, then the signal of 65 of decimal will actually entered into the CPU. अब मैंने तो प्रेस कैपिटल ए किया, और अब मैं कह रहा हूँ सिग्नल जो गया है वो डेसिमल की वैल्यू गई है 65. क्यों? दिस इज अ क्वेश्चन. अब बेटा इंटरनेट से इसको सर्च कीजिएगा, आस्की टेबल लिखकर, ASCII, आई रिपीट, ASCII, ठीक है. इट्स स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, राइट? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. ठीक है बेटा, इसको आप सर्च कीजिएगा कि क्या है. अच्छा, अब होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट आस्की, दैट 60 a, capital A is equal to the 65 of decimal. Now this 65 will actually convert into the binary code. अब बाइनरी में क्यों कन्वर्ट करेगा? बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड अ सिंगल लैंग्वेज, दैट इज अ बाइनरी लैंग्वेज. तो कंप्यूटर बेटा उसे कन्वर्ट करेगा पहले, ताकि उसे अंडरस्टैंड कर सके दैट व्हाट इट इज. तो जो हमारा 65 सिग्नल जाएगा बिकॉज ऑफ ए, then computer will translate it into the binary, and the binary equivalent will be 1, 5 times 0 and 1. 65 डेसिमल जो है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1, 5 टाइम 0 एंड 1 होता है. बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1. सो ऑल द वैल्यूज will be represented by these two characters only, 0 and 1. तो यहाँ पर 1, 5 टाइम 0 एंड 1 उसे मिलेगा. देन कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज दिस. ठीक है. तो कंप्यूटर में जो जितने भी आप कीज प्रेस कर रहे होते हैं, then computer will actually translate all these letters into the decimal, into the binary numbers, binary equivalents. कीबोर्ड से हम प्रेस करेक्टर करते हैं, लेकिन सिग्नल डेसिमल का जाता है और उस डेसिमल की वैल्यू को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर बाइनरी में टू अंडरस्टैंड इटसेल्फ. देन जब उसे अंडरस्टैंड कर लेता है, देन इट अगेन कन्वर्ट इनटू द
ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिसके बाद वो आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट होता है, देन वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, और ये सारा काम विद इन अ सेकेंड्स हो रहा होता है। ठीक है, यही वजह है कि हम यहाँ से की प्रेस करते हैं ए, और सामने हमें फौरन नज़र भी आ जाती है वो ए ही, लेकिन उसके बैकएंड भी सारा प्रोसेस हो जाता है। वो उसे कन्वर्ट भी करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है पहले बाइनरी में, देन अगेन बाइनरी से कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, एंड देन उसको रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द आउटपुट डिवाइसेस।